Good morning, good morning, good morning, students. Let's start today's session. Before starting today's session, yes, first we will revise all basic entries. But basic entries ke pehle, what we are going to do today, we are going to start with bank reconciliation statement first, and after break, rectification of errors. So, beta, first we will start with our basic rules of accounts. बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंट्स चलो जल्दी से आपको बताना है बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंट्स क्विकली वी विल रिवाइज प्रीवियस बेटा जितना भी होगा टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज लेजर अकाउंट्स टुडे वी आर गोइंग टू टेक क्विज आल्सो क्विज स्टार्टिंग में ही होगा ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड आफ्टर दैट we are going to solve some illustrations of BRS. So friends, first thing, BRS में what is important? So basic rules of accounts. Number one, traditional rule and modern rule. ट्रेडिशनल रूल क्या बताते हैं? ट्रेडिशनल रूल पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट, डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेटर becomes giver, creditor becomes receiver. Real account, debit what comes in, credit what goes out, and nominal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Then मॉडर्न अप्रोच में एसेट डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी क्रेडिट, एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम क्रेडिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस. कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल एंड इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट, एक्सपेंसेस माइनस इनकम इज इक्वल टू लॉस. मॉडर्न अप्रोच होगा तो आपको कैसे एंट्रीज करने हैं? तो डायरेक्टली इक्वेशन थ्रू एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. बट ट्रेडिशनल अप्रोच होगा तो आइडेंटिफाई टू अकाउंट्स, देन आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ अकाउंट, देन बेटा अप्लाई रूल एंड पास जर्नल एंट्री. सो बेसिक इंपॉर्टेंट है. कुछ एंट्रीज मैं फटाफट बताता हूं आपको. सम एंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो कौन से एंट्रीज है टुडे? आई विल आस्क यू सम एंट्रीज, 5 एंट्रीज. थिंक ऑन दिस वेदर यू आर आंसर, you can answer these 5 entries. Number 1, लोन टेकन. लोन टेकन की एंट्री क्या होगी? फटाक से बताइए. लोन टेकन की एंट्री, कैश अकाउंट to loan account. Loan is a personal account. It's our liability to pay. Cash is a real account. Yes, sir. We can answer it. Second one, income receivable. Income receivable. Can you answer income receivable? Yes, beta. Income receivable answer दे सकते हो. What will be the entry for income receivable? फटाफट बताइए. Income receivable entry will be income receivable account debit to income. Income receivable is our asset, and this is accrued concept of accounting. This is the income of the current year but yet not received, so this is receivable. Receivable छे तो debtor छे. To income, income is our the credit all incomes and gains. Very good. Third rule, चलो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए फटाफट. Yes, please try to attend all sessions in live one. Don't miss your sessions. Regularly attend कीजिए all your sessions in live classes only. Otherwise, you know the results are very less and students are not consistent, and that is the reason why they are getting failure results. So whether you want to clear your exam or whether you want to fail your exam, it's in your hand. जो भी बच्चा लाइव में अटेंड करेगा तो यू कैन इंटरेक्ट विथ मी. इंटरेक्शन नहीं हुआ तो आपको डिफिकल्ट होने वाला है. तो ये पहली बात बता देता हूं. जितने भी स्टूडेंट्स है वो ट्राई कीजिए पूरा का पूरा लाइव में अटेंड करने की. लाइव ही इंपॉर्टेंट है. इनकम रिसीवेबल टू इनकम. यस. नाउ थर्ड एंट्री. चलो थर्ड एंट्री पे आते हैं. थर्ड एंट्री, is income received in advance. Income received in advance. Think on this. Income debit to income received in advance. Income received in advance is our liability, and income we are going to cancel it. Fourth entry, prepaid expenses. Prepaid expenses account debit to expenses. This is our asset, and expenses we are going to cancel because this is expenses of the next year. Expense payable, expense to expense,
payable. It's our liability credit balance, expenses of the current year. So we record it. बेटा now you have grip over this all entries. एंट्रीज के ऊपर बेटा आपको ग्रिप आ चुकी है, ऐसा मैं एज्यूम करता हूं टुडे. यस. सम प्रोफॉर्मास, डेटर्स, हाउ टू रिकॉल. चलो रिकॉल करो डेटर्स. यस. डेटर्स में कैसे याद करोगे? डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन टू सेल्स by cash, by discount allowed, by sales return, by bad debts, by bills receivable, to bills receivable dishonor, sir, and by balance carried down. Very simple, sir, very simple. Debtors भी समझ में आ गया. Very good. Very good, Chitra. Yes. साक्षी कब से बोल रहे रे बेटा? साक्षी पांडे का एक ही चल रहा है सर. हैप्पी नागपंचमी डे. ठीक है. वेरी गुड पंकज सिंह. I must assure you, if any pro forma, any entry, if you ask me, I can answer this confidently. Very good. ठीक है. Creditors, यदि आप लोगों को जस्ट इफ यू वांट टू कम्युनिकेट कि भाई सो पिंपरी चिंचवड़ ब्रांच इज स्टार्टिंग अ न्यू बैच, डेली 1 आवर का रहेगा. इट इज ओनली फॉर युअर अंडरस्टैंडिंग बेटा कि आप लोग उसमें मैं मैक्सिमम आप लोगों से तैयारी करके लूंगा. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कम्युनिकेशन थ्रू जूम तो होगा. सो जो भी बच्चे रहेंगे तो सो इट्स थ्रू पिंपरी चिंचवड़ ब्रांच. यू हैव टू पे देयर ओनली. ओके, इट्स ICI branch only. But one benefit you can take, only one benefit is that you can directly communicate with me on that channel, their Zoom channel. Yes. By creditors, by purchases, to bank, to purchase return, to discount received, to deficiency, to bills payable, by bills payable dishonor. Maximum 40. निशी maximum 40 बेटा. चलो. Expenses, to prepaid, by prepaid, by payable, to payable, to cash, by P&L. विनायक. यस बेटा. गौरी का यस. इनकम, टू रिसीवेबल, by receivable, by received in advance, to received in advance, by cash, to P&L. इजी, एकदम इजी है. बेटा कुछ तो बैच 7 विद संकेत शाह सर ऐसा है. ठीक है. चलिए. सो नाउ एवरीवन इज क्लियर विद दिस. यस, सबको इजी लगा. चलो. नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू सम एंट्रीज BRS की. BRS प्लीज क्विकली रिवाइज करके देता हूं. CB टू PB जाना है.
If you want to move from CB to PB, PB is box, that is the first step. What is the second step? Second step is very simple. You have to write whether CB balance is increasing. For example, check deposited. Check deposited is 100 and passbook में 0 but not cleared. So passbook को box किया, and to get the answer of box, you have to write over there -100. If it is OD question, then it is exceptional problem. So minus becomes plus. एकदम easy है. एकदम easy है. This is the simplest technique. For BRS, you can use other technique, but my suggestion, follow my technique if you are attending my classes regularly. Okay, chalo, BRS easy है. Okay. Yes, बिट्टू सिंह बोल रहे हैं आज मेरा पहला लेक्चर है. वेलकम टू ICI क्लासेस बेटा. See, before starting today's session, I will quickly tell you some things. मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ. CA is not a course which is very difficult one, but CA is a course where your patience will be tested. आपके patience बहुत ज़्यादा जरूरी है. Normally, students are making mistake. They are very sincere on very first day. They are sincere on second day, third day, but their sincerity beta goes down, 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 days by days, और after 15 days you will think कि मैं आप बाकी चीजों में लग जाते हो. वेब सीरीज देखना, बाकी चीजें करना, इसमें आप लोग बहुत ज्यादा, and your consistency beta goes down. So this is your first month. Now after 3 months beta, suddenly you realize that your exam is in December, and then beta you wake up और आप लोग जब एकदम से उठते हो तो आपको समझ में आता है now syllabus is beyond your control. So those students who are very punctual, those students who are very sincere, beta remember those students are not going to fail in CA exam. Remember, I will be with you not only in your passing but also in your failure. Okay, don't worry. But you cannot blame faculties after these things because you don't want to come out from your comfort zone. This is a simple way कि आप लोगों को आपके comfort zone से बाहर नहीं आना होता है, और उसके वजह से क्या होता है, you are watching your failure year after year in this course. Sir, if you studied hard and if you get failure, it's okay. I am not against you. कि भाई आपने स्टडी किया पर मैं वहां पे सडन, देखो कोहली ने कितनी भी सेंचुरी बनाई या कोहली 0 पे भी आउट हुआ, one thing you have to understand, so 0 is not he is not hard worker, it's only a bad luck. And in CA course also I will tell you ki yes, you studied hard but paper was difficult, then better in that case I will definitely tell you ki next attempt mein you are going to pass. See, intelligent students, they are mentally fit for any subject. Okay, but those students who are average, so you have to work very hard in CA course. And 100% I'm telling you, this is a course is not required very intelligence level, but it requires hard work plus thoda sa smart work, thoda sa little smart work. Okay, and daily आप लोग यदि ये बराबर करोगे, if you plan your day according to your schedule for next 1.5 years, you are not going to fail in exam. Now what happens? Suppose if you sit for 2 hours and then you file कि हाँ this faculty है ना, ये ICI classes वाली faculty है, चलो ये थोड़ा fast जा रही है, but you have to understand जो slow सिखाने वाला है उसका syllabus कभी complete ही नहीं होगा, ये भी ध्यान में रखो. तो थोड़ा सा अपने comfort level से बाहर आओ. You don't want to learn something which is new. You want to learn that thing which you think it is very easy. तो आप लोग उसको ना, आपको 2+2 पसंद है, पर भाई एग्जाम में 2+2 नहीं आने वाला है, एग्जाम में 29x7 आने वाला है. And that realization when you will get, see now what I will tell you a small story, one small story, एकदम छोटी सी स्टोरी 2 मिनट में बताता हूँ. One of my student in last batch in inter, she cleared foundation with me. And after that beta she joined for inter classes. She joined accounts costing with me. Yes, she joined for these classes and she scored in first attempt. Yes, she didn't study everything, she didn't hard work. So in that case beta she scored only 35 marks and here 41 marks in accounts and costing. But after that beta I stopped my face-to-face classes, so I told her to watch my sessions from
Zoom or anything from other media. So because I stopped my face-to-face classes. Then beta, what happened? Account costing 3541 she scored. In second attempt, she joined all face-to-face classes. She changed the faculty. अभी फैकल्टी चेंज किया तो आपका एक रैपो भी उनके साथ जुड़ा हुआ रहता है. सो एवरीथिंग ब्रोक. And in second attempt, she attended all face-to-face revision classes and she got the result. Again, she got the result 30 in accountancy and 28 in costing. See, changing the faculty will never the good option. मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आपको हाँ, बट आई एम गिविंग यू वेरी सिंसियरली ऑल यूर इंडेक्स, ऑल यूर 100 पेजेस बुक, ऑल 400 पेजेस बुक, बट स्टिल इफ यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, दैट बेटा रिजल्ट जब फेल्योर आएगा, इट्स यू ओनली द रीजन हु इज गेटिंग बेटा फेल्योर. तो आप मुझे बताइए, यू आर ओनली द रीजन फॉर योर फेल्योर. आई एम नॉट द रीजन. If you listen carefully, if you are listen sincerely, then beta you are not going to fail. This is my assurance. मेरे सब्जेक्ट में तो, मेरे सब्जेक्ट में you will score more than 80 marks. Because मैं मन से सिखाता हूं, ये यहाँ पे मैं इसके लिए नहीं सिखा रहा हूं, ये ध्यान में रखो. तो ये चीजें ध्यान में रखो. So sincerity is very important. Your sincerity means what? 400 pages book and your revision book. Revision book is very important, not only in my subject, it is important in other subjects also. So फैकल्टी बदलना या अपने को जो समझ में आता है वो फैकल्टी से. सो 11-12 का ही सोचना है कि आपको. कल मैं, मेरा ऑफिस का काम था. यस्टरडे आई प्रिपेयर्ड वन कैश फ्लो स्टेटमेंट. मेरी स्टूडेंट वही ऑफिस में वेयर माय वाइफ वर्क्स, तो वहां पे शी इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरी वन ऑफ द स्टूडेंट, एंड शी ज्वाइन दैट ऑफिस. नाउ शी सैट फॉर ऑलमोस्ट 5 days to tally that cash flow statement, but she didn't tally. She was my student for foundation and intern. And when I watched the cash flow statement, when I went through that cash flow statement, I understood she made blunders. ऐसे blunders मतलब इतने horrible mistakes कि ये कोई बोलेगा ही नहीं कि भाई ये सीए कैसे बनी, मेरी इज्जत निकलेगी कि भाई आपने सर पढ़ाया क्या इनको. तो इतना छोटा छोटा मिस्टेक किया था. ठीक है, मैं अभी वो नाउ शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो मैं उसको ब्लेम नहीं करूंगा. बट आपके बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम फाउंडेशन लेवल, और बेसिक्स पे फोकस कीजिए. आई टैलीड इट विद इन 2 hours. कितने आवर्स में मैंने टैली किया? 2 hours में मैंने वो कैश फ्लो स्टेटमेंट टैली किया. एंड शी टुक ऑलमोस्ट 5 days टू टैली दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट. फिर नहीं हुआ टैली, फिर मुझे बुलाया, सर करवा दीजिए, एंड 2 घंटे में मैंने वो टैली करवा दिया. पर आप सोचो क्यों टैली किया? बिकॉज माई बेसिक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, और मैं उससे फोकस रहता हूं. चलो ठीक है, बस हो गया आज का ज्ञान. चलो वी विल प्ले क्विज. यस, साइलेंट क्यों हो? चलिए क्विज में आ जाइए. सीबी टू पीबी. चलो टेल मी द आंसर. बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस. यस, क्विज 1. चलो बैंक चार्जेस बताइए. Let's see who is answering very fast. CB to PB. देवोज्योति ने आंसर दिया है एड. प्रियदर्शी ने आंसर दिया है लेस. देखते हैं कौन करेक्ट आंसर पे है. CB 0, बैंक चार्जेस -100. -100 को बॉक्स किया. CB to PB. So your answer should be -100 and your winner is Priyadarshini ji, SRO. I don't know beta Debojyoti why you are making mistakes, why you answered add, but add is a wrong answer. CB में से less होगा. Second one,
bank OD question. Bank OD. So it's a overdraft question. Listen carefully. One of the customer, second one, and write down answer like two and answer. I don't want only add less. I want answer two and your answer. So I can understand कि exactly आपने कौन सा आंसर दिया. Customer directly deposited in bank. Customer directly deposited in bank. Customer directly deposited in bank. मैं सिर्फ जो फर्स्ट आंसर देता है उसी का नाम लेता हूं. मैं जो फर्स्ट आंसर देता है उसी का नाम लेता हूं. I never take other students' names. Others are also correct. Second answer by यश. सबसे तेज आंसर दिया है यश ने. और करेक्ट आंसर इज सीबी पीबी 0 100 बॉक्स. एंड करेक्ट आंसर इज कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट किया तो करेक्ट आंसर इज +100. बट दिस क्वेश्चन इज ऑफ ओवरड्राफ्ट. सो यश करेक्ट आंसर इज लेस. करेक्ट आंसर इज लेस. और सबसे तेज आंसर दिया है एनआरओ के शोएब ने. शोएब आंसर्ड वेरी फास्ट आफ्टर प्रियदर्शनी बेटा. यस. कीर्ति रॉन्ग आंसर. यश रॉन्ग आंसर. कीर्ति और यश ने सबसे तेज आंसर दिया बट रॉन्ग आंसर. दिस इज ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन. थर्ड वन. थर्ड वन. सोहेल तेरे भी आंसर दिख रहे बट तू लेट आंसर देता है तो मैं हमेशा तेरा नाम नहीं ले पाऊंगा. लेस आंसर्स. मेनी स्टूडेंट आंसर गेव करेक्ट आंसर लेस. थर्ड वन. PB to CB. Now see PB to CB. Normal problem. Dividend collected by bank directly. Dividend collected by bank directly. Dividend collected by bank directly. Yes, beta Abdul. Final answer is less because OD problem. OD में आंसर चेंज हो जाता है. OD में आंसर चेंज हो जाता है. Yes. Third one. Dividend collected by bank directly. CB 0. Please watch my previous sessions. Last session में I already completed BRS. PB to CB. CB को बॉक्स किया. And dividend collected by bank directly 100 rupees. Okay. So थर्ड का करेक्ट आंसर है. थर्ड का करेक्ट आंसर है लेस. एंड हु इज विनर? पार्वती. वेरी गुड बेटा. फ्रॉम ERO. ERO की पार्वती सबसे तेज है. वेरी गुड. करेक्ट आंसर इज लेस. CB टू PB नहीं जा रहे थे, PB टू CB जा रहे थे. तो दोज हु आंसर्ड रॉन्ग, प्लीज वॉच माय प्रीवियस सेशन वंस अगेन. फोर्थ वन. CB टू PB. CB टू PB OD प्रॉब्लम. OD. फोर्थ वन. CB टू PB OD का प्रॉब्लम है. ध्यान में रखना, इट्स OD प्रॉब्लम. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. जल्दी से बताइए. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. Yes, Soumya, your answers are visible. चेक इशूड -100. PB 0. 0 को बॉक्स किया.
करेक्ट आंसर इज +100 आना चाहिए, बट ओडी छे तो लेस छे. सीबीपीबी check issued -100 0. So Nancy Sharma, other students answered wrong beta. Arti, Arit Das, Saurav, Shravani Pawar, beta all beta answered add, but answer is less क्योंकि ये ओडी का क्वेश्चन है, ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है, ओडी क्वेश्चन. सो करेक्ट आंसर इज, किसने दिया? रोहित. रोहित ने सबसे तेज आंसर दिया एनआरओ. आज सीआरओ पीछे है भाई. लेस इज अ करेक्ट आंसर. लेस ओडी क्वेश्चन था. लास्ट क्वेश्चन, पीबी टू सीबी नाउ. पीबी टू सीबी क्वेश्चन इज बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक. बेटा मैं सबसे तेज आंसर बताता हूं. दर्शिका इज गिविंग रॉन्ग आंसर्स. आई विल रिवाइज इट टुडे अगेन एंड प्रैक्टिस मोर. वेरी गुड बेटा. बहुत सिंपल है रे, बहुत सिंपल है. Why you are giving wrong answer? I really don't understand. If you can't understand these questions, how you are going to become chartered accountants? मतलब इतना सिंपल है कि बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक. नाउ लेट्स सी. नॉर्मल क्वेश्चन, -200 -100. बैंक चार्जेस assume 100. So बैंक चार्जेस will reduce your पासबुक बैलेंस एंड कैश बुक बैलेंस. सो कैश बुक में -200 को बॉक्स किया. टू गेट द आंसर ऑफ बॉक्स हियर, सो योर करेक्ट आंसर विल बी लेस. लेस इज द करेक्ट आंसर. सो Saurav is again winner NRO. So today's winner beta 3 NRO, 1 SRO, 1 ERO. So आज के विनर है सक्षम. यू हैव टू प्रैक्टिस इट. बहुत गलत आंसर्स दे रहा है आज. So correct answer is -100 is a correct answer. Rishabh Jain, बेटा I won't take all names. I will take that person name जो सबसे तेज आंसर देता है. बेटा कैश बुक को बॉक्स किया था, कैश बुक को बॉक्स किया, कैश बुक का आंसर इधर चाहिए. सो -200 सामने चाहिए, तो यू हैव टू डिडक्ट -100. -100 will become -200. So less. चंचल, थोड़ा सा बेसिक सुधारो बेटा. बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस. assume बैंक चार्जेस 100, but you recorded twice मतलब कैश बुक में -200. So -200 -100 -200 को बॉक्स, and to get the answer of box in unbox you have to deduct again -100. Yes. गोस्वामी जी, अमलन रॉय, योर आंसर्स आर बेटा विजिबल टू मी. सर एक बार थोड़ा लास्ट लेक्चर का रिवीजन करवा दो. थोड़ा थोड़ा सबको डाउट. हाँ, रिविजन्स में बेटा बहुत सिंपल है. यस बेटा, टैक्स प्लस का बटन यूज कर सकते हो आप. ओडी में प्रॉब्लम उल्टा हो जाता है, ये ध्यान में रखो. So the screen cannot be so that I am using a watching live session on YouTube. No problem, beta. Is my answer visible to sir? Yes, beta. Rikshika Raj है. So we can use calculator, right? So calculator क्या यूज करना है इसको? मतलब इतना तो बेसिक मैथ्स आना चाहिए. -200 चाहिए, -100 में तो -100 और लेना पड़ेगा. सो -100 -100 बिकम्स -200. इसके लिए कौन कैलसी यूज करता है?
Nazia, try to understand, beta. I will tell you the last time to all of you. See, beta, we have to identify CB or PB. CB to PB or PB to CB. It's given in the question. Don't worry. CB to PB होगा तो PB को बॉक्स करेंगे, CB को बॉक्स करेंगे. No, beta, it won't bounce. Arit Das, CB, PB. Suppose now you have to think. Check issued. Check issue किया तो you will first record in cash book. So entry point किधर हुआ? Cash book में. So cash book में check issued, check दिया तो you have given your check to someone. Okay, so your bank balance is going to down. So this is -100. Your bank balance क्या होने वाला है? -100. And passbook में 0. Passbook में you are not recorded. So your entry point is cash book. Now where to make a box? CB to PB है तो PB को box किया. And to get the answer of box in unbox, आपको +100 करना पड़ेगा. It's very simple process. Entry point you have to understand, sir. Okay? Chalo, do one thing. Today you tell me, yes, I will ask you some questions, 5 questions. You will tell me entry point. Entry point means whether it should be recorded in cash book or whether it is recorded in passbook. तो आप मुझे entry point बताओगे. ठीक है? CB में एंट्री होने वाला है या PB में एंट्री होने वाला है, ये आप मुझे बताओगे. What is the entry point? And in entry point, whether your balance is positive or negative. Negative means, for example, check deposited. Check deposited. So first point, check deposited. So what is your entry point? Entry point, check deposited. First, where you will record in cash book. कैश बुक में यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड. चेक डिपॉजिट किया तो यू विल रिकॉर्ड फर्स्ट ना, बैंक में बाद में क्लियर होगा. सो पहले आपके पास चेक की एंट्री होगी, बराबर है. सो सीबी एंड चेक डिपॉजिट किया तो योर बैंक बैलेंस इज गोइंग टू अप. ओके, सो कैश बुक का बैलेंस आपका अप होने वाला है. इट इज योर चेक डिपॉजिट, कैश बुक इंक्रीजेस. एंट्री पॉइंट यू हैव टू टेल मी. सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल मी द एंट्री पॉइंट. सो पहले किधर एंट्री पॉइंट बतानी है आपको. ओके, वेरी गुड बेटा ऋषभ. बेटा सीबी टू पीबी, पीबी टू सीबी, ये आप लोगों को समझ में आएगा. यस, कैश बुक इज अ एंट्री पॉइंट एंड पॉजिटिव बैलेंस, बैलेंस बढ़ने वाला है. सेकंड वन, बैंक चार्जेस. थिंक पॉजिटिवली. बैंक चार्जेस, लॉजिक डेवलप करो. बैंक चार्जेस, who is going to record first? Bank charges. Who is going to record first? Yes बेटा, शो हो रहा है. सस्पेंस इज बेटा सस्पेंस अकाउंट ना, इसीलिए तो सस्पेंस है. इट्स अ सस्पेंस अकाउंट सुंदरन. तो बैंक चार्जेस का एंट्री पॉइंट क्या है? वेयर फर्स्ट टाइम बैंक चार्जेस विल बी रिकॉर्डेड. पहली बार बैंक चार्जेस कहां पे रिकॉर्ड होंगे? नाउ निशी गर्ग इज आस्किंग मी, आंसरिंग सीबी एंड पीबी बोथ. सिया, बैंक चार्जेस कौन डिडक्ट करेगा बेटा? पहले बैंक डिडक्ट करेगा कि नहीं? बैंक ने पहले डिडक्ट किए. सो एंट्री पॉइंट क्या होगा? फर्स्ट इट विल बी रिकॉर्डेड बाय बैंक एंड देन वी विल गेट द इंफॉर्मेशन ना. सो passbook is a entry point and bank charges will deduct your balance. Passbook. Some students are answering cash book. Yeah, how it is cash book? First time where to record? First entry where it will be recorded. बैंक चार्जेस किसको पता होगा? बैंक को पता होगा ना चार्जेस. हाउ वन कैन आंसर कैश बुक यार? मतलब थोड़ा तो सेंस लगाओ. एंड यू आर ब्लेमिंग आईसीआई कि हम लोगों को समझ में नहीं आता. फिर यू आर नॉट डेवलपिंग योर कॉमन सेंस.
और सब लोग आंसर दीजिए, सब लोग। अब ये ध्रुव शाह, अब ये देखो ये क्या कर रहा है, इसका क्या, अभी ये क्वेरी पढ़ने को भी मुझे शर्म आती है। चलो आगे जाते हैं। थर्ड वन, थर्ड वन बेटा। अब ये थर्ड वन देखते। अभी ये देखो थर्ड वन, अनुष्का जी तो बेटा भगवान है। अनुष्का जी ने तो पहले ही बता दिया थर्ड का आंसर पीबी लेस, मतलब ये भविष्य जानते हैं। ओके, अनुष्का जी डायरेक्ट आंसर दिया थर्ड का। इंटरेस्ट कलेक्टेड, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक डायरेक्टली, बाय बैंक डायरेक्टली। थर्ड का आंसर कैसे आ सकता है? एंड ध्रुव शाह आंसर दे रहे बैंक चार्जेस टू कैश, डायरेक्टली आंसर। मैं एंट्री पॉइंट पूछ रहा हूं, ये जर्नल एंट्री कर रहे हैं। वेरी गुड ध्रुव। निश्चय, बहुत कॉमेडी लोग हैं बेटा अपने इधर। गौरी का शर्मा बोल रहे इलेक्ट्रेस कलेक्टेड बाय बैंक, कलेक्ट किया बेटा पासबुक, एंड कलेक्शन मींस योर बैलेंस इज गोइंग टू इंक्रीज, योर बैंक बैलेंस इज इंक्रीजिंग, पासबुक में ऐड होगा। पासबुक में इंक्रीज होगा। फोर्थ वन, चेक डिसऑनर, चेक डिसऑनर्ड। फोर्थ वन, चेक डिसऑनर्ड। कुछ अद्भुत बच्चे भी रहते बेटा, जो फोर्थ का आंसर भी स्टार्टिंग में क्वेश्चन के पहले ही बता देते हैं। अरे पीबी में लेस, ऐड, एंट्री पॉइंट, पीबी में से माइनस होगा या ऐड होगा, दैट यू हैव टू आंसर। ओनली पीबी कैसे चलेगा ऋषभ? यू हैव टू आंसर ना बेटा। सुलक्षणा, पीबी लेस, पीबी लेस। लास्ट, लास्ट है अभी आज का। एंट्री पॉइंट यू हैव टू आइडेंटिफाई। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हार्दिक का क्या डाउट है? विजिबल है सबका आंसर। चेक डिपॉजिटेड एंड डिसऑनर हुआ है, ऊपर का चेक डिपॉजिटेड एंड डिसऑनर। सीबी में से लेस, सीबी में से लेस। सो दीज आर एंट्री पॉइंट्स। अंडरस्टूड नाउ व्हाट आर एंट्री पॉइंट्स? चलो, now let's move to question part. Now it's very simple. Let's move to question part. And please watch my previous sessions. our ICI के previous sessions को देख लीजिए।
ऐसे के previous sessions देखने के बाद you will understand in the last session we started with BRS chapter. So I have finished all concepts in detail and I think we have finished with कितना illustrations था? I think 4 illustrations we have finished. Okay. Today we are going to start with new concept. And day after tomorrow, मतलब on Monday को I will take revision of all these illustrations through PPT. फटाफट revision. So day after tomorrow बेटा revision session है. Yes. गुस्सा नहीं करता रे बेटा. अरबाज, प्रॉब्लम क्या है? बुरा इस बात का लगता है ना अरबाज कि स्टूडेंट्स लोग बेसिक्स में इतने वांदे हैं और आप लोगों को मैं नहीं चिल्लाऊंगा ना तो बेटा क्या प्रॉब्लम होगा, आप बहुत लाइटली रहोगे, मतलब बहुत ज्यादा आप ऐसा बोल सकते हो कि यस केयरफुल नहीं रहते हो फिर। और ये चीजें जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, ऑन 30th September 2019, on 30th September 2019, चलो स्टेप 1 में आपने बोला था हम खुद सीबी टू पीबी और पीबी टू सीबी सिलेक्ट कर सकते हैं और आंसर दोनों में सेम आएगा, लेकिन क्विज में 5th क्वेश्चन में सेम नहीं आ रहा है। अरे फाइनल आंसर सेम आएगा। ठीक है हार्दिक, लेट्स सी। बीआरएस का वेटेज कंपल्सरी 8 मार्क्स आ रहा। लेट्स सी। On 30th September 2019, the bank account of X, according to the bank column of cash book, was overdrawn. Overdrawn मतलब क्या बेटा? You will start with by balance brought down. Write down over there. Write down on study material by balance brought down. On same date, the bank statement shows a credit balance of 20,758. Bank statement matlab this is passbook balance and passbook is showing credit मतलब अपना डेबिट। ओके, डेबिट अच्छी बात है, सो डेबिट है तो फेवरेबल है, पासबुक में फेवरेबल। An examination of cash book and bank statement are given below. A check of 13,14,000 deposited on 29th September was credited by bank only on 3rd October. Think on this. Delayed by us or delayed by bank? Tell me. अभी इसमें नया क्या है? You are required to prepare adjusted cash book. Now here in this question, we are going to prepare adjusted cash book and BRS. 2 parts. Wait. In adjusted cash book, we will record delay from our side or mistake from our side. And bank ka delay. If bank delays or bank mistake, we will record it in BRS statement. Adjusted cash book is like T format. Your adjusted cash book. Now here if I open adjusted means we have not recorded it correctly or delay from our side. हमारे साइड से डिले हुआ और हमारे साइड से गलती हुआ तो वी विल रिकॉर्ड इट इन एडजस्टेड कैश बुक। कहां पे रिकॉर्ड करना है? एडजस्टेड कैश बुक। यस सर। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन।
कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन है 13 लाख, सॉरी मिस्टेक का 4062, 4062, ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट 13,14,000, ओके। उसके बाद a check 13,14,000 deposited but was credited by bank on 3rd of October, ठीक है। बीआरएस, बीआरएस का पार्ट है ये, किसका पार्ट है, बीआरएस का पार्ट है। 13,14,000 was credited by bank only on 3rd of October, तो ये बैंक के साइड से डिले हुआ है, सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन बीआरएस। अब पेमेंट बाय चेक 16,000 has been entered twice in the cash book, 16,000 entered twice in cash book। अभी 16,000 twice in the cash book, बताइए किसके साइड से गलती हुआ, it's a mistake by us, so we will rectify it। अब पेमेंट 16,000 twice हुआ, so now we have to cancel one payment, so we will record on the debit side, you can see here we will record to party account 16,000, 16,000 पार्टी अकाउंट में डेबिट साइड पे, so this is recorded in adjusted cash book, you can note down over there, it is recorded in adjusted cash book। yes sir, on 29th September 2019 the bank credited an amount 1,17,400 received from customer of X, but the advice was not received by X until 1st October 2018। लाइट चली गई, so 29 September the bank credited 1,17,400, okay, from customer of X, but the advice was not received। चलो, तो बैंक ने क्रेडिट किया, but in our book it is delayed, so our book delayed means adjusted cash book। बैंक क्रेडिट मतलब our asset, बैंक का क्रेडिट इज लाइबिलिटी, पर फॉर अस इट इज एसेट, एसेट है तो रिसीट है, सो वी विल राइट 2x in adjusted cash book 1,17,400। काय होता है 1,17,400। bank charges amounted to 580, bank charges amounted to 580 by bank charges, by bank charges। Who has not recorded beta? Shivansh, you have to watch my sessions from day 1, from 12th of June. All lectures you have to watch. Bank charges 580 not entered in cash book. So cash book में नहीं enter हुआ तो adjusted cash book में we will record it. It's delay from our side. And bank charges means payment 580 debit.
On 6th September, the bank credited 20,000 to X in error. It's a bank mistake. So it's a BRS item. So BRS item, just note down, it's a BRS item. After that, a bill of exchange. A bill of exchange. 1,40,000 was discounted by X in with his bank. The bill was dishonored, but no entry had been made in the books of X. 1,40,000 was discounted. This bill was dishonored, but no entry had been made in the books of X. चलो बोलिए. दिस बिल वॉज डिसऑनर, तो ये हमारे साइड से डिले है. सो एडजस्टेड कैश बुक, एंड एडजस्टेड कैश बुक में वी विल रिकॉर्ड बाय कस्टमर. सो डिसऑनर हुआ, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर. सो एंट्री विल बी 1,40,000 on the payment side. Payment side. Check issued. काय होते? Check issued up to 30th September. Check issued but not presented for payment. So चेक इशू किया तो हमारे साइड से गलती नहीं है, बैंक के साइड से गलती है. इट इज बीआरएस आइटम. So now find out the closing balance. 4062 plus 580 plus 1,40,000. Here it is 144,642 and 16,000 plus 1,17,400. Debit side total is 133,400. So credit side is more and credit ज्यादा है, तो two balance carried down. $11,242. 11,242. Yes. And credit ज्यादा है, तो दिस इज प्रॉब्लम ऑफ ओवरड्राफ्ट. ये प्रॉब्लम है ओवरड्राफ्ट का. ओके, सो प्रॉब्लम इज ऑफ ओवरड्राफ्ट. अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. नाउ वी विल डू बीआरएस एंट्रीज. यस, लास्ट एंट्री एक्सप्लेन किया ना बेटा. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. सो किसके साइड से डिले हुआ? अंजलि, इट्स अ डिले फ्रॉम, सॉरी अंशिका, इट इज अ डिले फ्रॉम विच साइड बेटा? किसके साइड से डिले हुआ? हमारे साइड से डिले हुआ है क्या? नहीं, बैंक के साइड से डिले हुआ. बैंक डिलेस देन बीआरएस. अवर मिस्टेक, एसीबी. सिंपल. अंडरस्टूड? सौरव, 16,000 रेक्टिफाई करने के लिए 16,000 क्रेडिट होने चाहिए, पर आपने दोबारा से डेबिट क्यों किया? बेटा बैंक चार्जेस आपने दो बार रिकॉर्ड किए. बैंक चार्जेस आपने दो बार रिकॉर्ड किए. सॉरी, 16,000 आपने दो बार पेमेंट रिकॉर्ड किया. पेमेंट, अभी पेमेंट को कैंसल करना होगा. सो हाउ टू कैंसल इट? बाय गिविंग अपोजिट इफेक्ट. करेक्ट है? सो डेबिट किया. अंडरस्टूड?
ठीक है, बस 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 6 क्वेश्चन के पहले बीआरएस। नाउ बेटा व्हाट इज बीआरएस प्रोसेस? सीबी टू पीबी, पीबी को बॉक्स किया, नंबर 1 की एंट्री, a check 13,14,000 was credited by bank on 3rd of October. 13,14,000 पासबुक में 0 बॉक्स। second one, a payment by check 16,000 has been entered twice in the cash book. कैश बुक में 16,000 दो बार रिकॉर्ड हुआ। सेकंड नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं आएगा, ये बीआरएस नहीं था। सेकंड वन नहीं, अभी बीआरएस कौन सा है? फिफ्थ वन। फिफ्थ वन इज बीआरएस। ऑन 6 September, bank credited 20,000 to X in error. 20,000 to X in error is BRS. बैंक ने क्रेडिट किया मींस पासबुक में एंट्री हुआ 20,000 एंड क्रेडिटेड मींस बेटा एसेट है, हमारी एसेट, तो बैंक बैलेंस ऊपर जाएगा, बैंक बैलेंस ऊपर जाएगा। सो 20,000 बॉक्स एंड टू गेट द आंसर 20,000 पॉजिटिव। नेक्स्ट वन, check issued but not presented for payment, 7th entry, check issued 0 को बॉक्स किया, 13,26,000 एड, $13,26,000। नाउ बेटा दिस इज ओडी क्वेश्चन, तो ओडी में लेस बन जाएगा ऐड, लेस बन जाएगा ऐड, ये हो जाएगा लेस एंड ये बन जाएगा लेस। सो टेक ऑन कैलसी, 11,242 प्लस 13,14,000 माइनस 20,000, $20,758 less. Final answer is less 20,758. And see, if you started with OD and OD negative, if you are getting the answer OD minus means favorable. OD minus means favorable. Very, very important point. OD का आंसर माइनस में मिला at the end, so it's a favorable. इजी छे, एकदम इजी, यस। फिफ्थ क्वेश्चन ओवर। सो वन मोर टाइम, एडजस्टेड कैश बुक यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई बीआरएस, करेक्ट है? चलो एक बार क्विक रिवीजन देखो, चेक डिपॉजिटेड, वन मोर टाइम, रिविजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज एडजस्टेड कैश बुक प्रॉब्लम, व्हाई? बिकॉज इन क्वेश्चन इटसेल्फ इट इज मेंशन appropriate rectification in cash book. So adjusted cash book में क्या आ जाएगा? Delay from my side or mistakes. Okay, mistakes by me, बैंक की mistakes and बैंक का delay DRS में जाएगा। Question 1, 13,14,000 we deposited but बैंक में clear नहीं हुआ, किसका delay है? बैंक से delay, बैंक से delay BRS। Payment by check 16,000 entered twice, adjusted cash book। 29 September, bank credited 1,17,400, adjusted cash book। Bank charges 580, adjusted cash book। Bank credited 20,000, BRS। Bill of exchange ACB, check issued BRS, लास्ट वाला। डिस्काउंट किया, डिसऑनर हुआ, ACB था, एंड 7th वन BRS। चलो
और फाइनल आंसर लेस हुआ, ओडी माइनस मीन्स इट्स अ फेवरेबल बैलेंस, ओडी निगेटिव। Ram, when the check is not cleared by the bank, does not increase the bank balance. So how when check dishonor, bank decreases passbook? अरे बैंक ने ऑलरेडी डिपॉजिट चेक का ऑनर किया था, उसके बाद वो डिसऑनर हुआ, सो बैंक ने वो क्लियर, बैंक में हमेशा कैसा एंट्री होता है? वेरी गुड क्वेश्चन बेटा राम। यस राम कुमार जी, व्हेन बेटा चेक डिपॉजिटेड, फर्स्ट व्हाट हैपेंड, बैंक डिपॉजिटेड चेक जो होता है ना, बैंक पहले 10,000 को आपके अकाउंट में पैसा डाल देता है, इन नॉट इन क्लियर बैलेंस, इन अनक्लियर बैलेंस, एंड बेटा वहां से फिर वापस से डिसऑनर हुआ तो वो उड़ा देता है, माइनस कर देता है। सो फर्स्ट दे इंक्रीज बैलेंस एंड देन दे डिक्रीज द बैलेंस, इट्स अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। ओके, पहले ऐड करते बाद में डिसऑनर हुआ तो बेटा दे गेट इंफॉर्मेशन आफ्टर 3 days। कभी कैसा होता है प्रोसेस कि जब भी आप चेक डालते हो, चेक डालने के बाद बेटा बैंक है ना, कभी भी देखना क्लियर एंड अनक्लियर बैलेंस। क्लियर मतलब जो आपके पास है, अनक्लियर मतलब जो चेक डिपॉजिट किए पर अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं, अनक्लियर। अभी वो अनक्लियर चेक आइदर आपका पैसा बढ़ेगा या डिसऑनर हुआ तो अनक्लियर वैसा ही रहेगा, सो अनक्लियर में से क्लियर में जाएगा या अनक्लियर में से जीरो हो जाएगा, तो डिसऑनर हुआ तो वो अनक्लियर बैलेंस है। गुड क्वेश्चन बेटा, वेरी गुड क्वेश्चन। यस, यू कैन राइट दिस फॉर्मेट इन एग्जाम ऑन रफ पेज, इजी है। अरे बेटा माइनस प्लस करके जो आएगा वो आंसर है, ये 20,758 वो नहीं करने का। यू हैव टू टेक ऑल एडजस्टमेंट ना विथ 20,000, 13,26,000, ये नहीं बैलेंस, सीधी प्रोसेस है, वन प्रोसेस एंड यू विल गेट द आंसर। Why we had taken the balance of ACB? Because we rectified our cash book and then we got the new balance. So new balance we will consider, new balance we will consider, not old balance. So first we rectified our adjusted cash book and that balance we will take. CB टू PB लेस 100 आया, लेकिन CB टू PB में ऐड 100, हाँ ठीक है, यस रिवर्स आएगा। ओवरड्राफ्ट का रिवर्स साइन करने का लॉजिक क्या है? ओवरड्राफ्ट इज लाइबिलिटी बेटा, लाइबिलिटी हैज अ क्रेडिट बैलेंस एंड नॉर्मल प्रॉब्लम हैज अ डेबिट बैलेंस, सो व्हाट एवर डेबिट वी हैव टू कैंसल इट इन ओडी, ओडी में अपोजिट बैलेंस होता है, देयरफॉर साइंस आर आल्सो गेटिंग अपोजिट। गुड क्वेश्चन, यस बेटा। दीक्षिका, दीक्षिका ना, दिशिका, सो दिशिका गुड क्वेश्चन बेटा। जितने भी पॉजिटिव बैलेंस होंगे निगेटिव हो जाएंगे, बिकॉज नॉर्मल प्रॉब्लम बेटा एसेट होती है and OD means liability, liability means credit balance, so opposite sign, so whatever plus normally we will reverse it in liability. Okay, yes, good question sir। कृष्णा सिंह 6 नंबर का पॉइंट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज 1,40,000 was discounted by X with बैंक, तो X ने क्या किया, जाके बैंक में डिस्काउंट किया। अभी बैंक ऑन ड्यू डेट ट्रॉई से ये पैसा लेगी, ट्रॉई से ये पैसा किसके पास आएगा? बैंक के पास। बट वो जो था, जो हमारे पास 1,40,000 का डिस्काउंट किया था वो बैंक ने, तो इसने, ये बंदे ने बेटा, ये निकला गद्दार, 1,40,000 इसने पैसा नहीं दिया। अभी इसने नहीं दिया तो बैंक किसके पास आएगा? एक्स के पास। तो बैंक ने एक्स का बैलेंस रिड्यूस कर दिया, बैंक ने एक्स का बैलेंस रिड्यूस कर दिया, और एक्स को ये पता ही नहीं है, सो पेमेंट साइड पे लिख दिया, बाय कस्टमर बिल्स रिसीवेबल डिसऑन। ओके, यस यस बेटा, इट इज अ मैचिंग बैलेंस। नो बेटा, यू कैनॉट सॉल्व लाइक नॉर्मल क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व इट्स ओडी क्वेश्चन, सेम आंसर जो सॉल्यूशन मैंने दिया है। 20,758 कहां गया? 20,758 इज बैंक बैलेंस, दैट इज एज पर पासबुक, पासबुक के हिसाब से।
On 30th December 2019, next one, rectification we'll do it after 12:30. So अभी 12 बजे है. We have to solve two more question, 6 and 7. गड़बड़ वाला we will do it on day after tomorrow, Monday को. So 6, 7 दो questions we are going to solve. चलो 6 question. On 30th December 2019, bank column of A Philip shows debit balance. Debit means asset. Normal problem, not OD problem. Now BRS का क्वेश्चन है या एडजस्टेड कैश बुक का? एडजस्टेड कैश बुक. चलो, सो फर्स्ट वन, चेक अमाउंटेड टू 6,30,000 इशूड टू ट्रेड पेबल. हमने चेक इशू किया, एंटर्ड इन कैश बुक बिफोर 30th December बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. पेमेंट के लिए गया ही नहीं. हुज डिले? किसका डिले? सोचो सोचो सोचो. हुज डिले? थिंक. यस, बैंक डिलेज. बैंक का डिले है तो कहां पे आएगा? बीआरएस. डेबिट बैलेंस. हाँ, सो एडजस्टेड कैश बुक. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4610. BRS item we will post it later. Check 2,50,000 recorded in cash book as having been paid into the bank but were entered in bank statement on 1st Jan. Check paid मतलब deposited. किसके साइड से डिले हुआ? डिले किसके साइड से हुआ बेटा? डिले किसके साइड से हुआ? बैंक का डिले मतलब बीआरएस. वेरी सिंपल सर. नाउ वी अंडरस्टूड इट. यस, नेक्स्ट वन. A check received 73,000 had been dishonored but no record in the cash book. Oh, not appeared in cash book. Our book, adjusted cash book. Dishonor. So dishonor matlab receipt or payment? Payment by customer. $73,000. 73,000. A dividend of rupees 3,80,000 paid direct to the bank, not recorded in cash book. Dividend directly recorded. Adjusted cash book. Dividend not recorded by us. Receipt है. 3,80,000. Yes, 3,80,000. Bank interest and charges 4,200 had been charged in the bank statement but not entered by us. Adjusted cash book, sir. And charges 4,200. Bank charges. No entry had been made in the book for a trade subscription
10,000 paid wide bankers order. Okay. Trade subscription paid, not recorded in cash book. ACB by trade subscription. $10,000. A check 27,000 drawn on B Philip had been charged to A Philip bank account by mistake in December 2019. हम कौन है? ए फिलिप. बैंक ने ड्रॉ किया चेक बी फिलिप को. So this mistake is made by bank. By bank. So BRS. BRS. Four 610. So balancing figure 297,410. Buy balance carried down. Yes. $297,410. BRS. CB to PB. Normal problem. CB to PB, normal problem. Check issued. Check issued है. So cash book is a entry point. Passbook में 0. Passbook को box. To get the answer of box in unbox plus 6,30,000. Very simple. Second is also BRS. Check deposited 2,50,000. Passbook में 0. Box 2,50,000. Negative. Third one 27,000 drawn on B Philip, charged to A Philip. So 0 drawn means bank balance decreases in our book. हमारे बुक में डिक्रीज हो गया. ओके. बॉक्स लेस 27,000. नॉर्मल प्रॉब्लम. तो टेक ऑन कैलसी 297,410 प्लस 6,30,000 minus 2,50,000 minus 27,000. I am getting the answer 6,50,410. खत्म. 6,50,410. Yes. हो गया. वर्किंग हो गया. इजी. यस बेटा सनी. एकदम इजी है. डोंट गिव अप बेटा. डोंट गिव अप. मम्मी थोड़ा सा आप वगे. एकदम इजी है बेटा. एकदम इजी. आई नो sometimes you are finding this difficult, but beta once you got the logic of this, कोई भी दुनिया की ताकत आपके दिमाग से निकालेगा नहीं. once you got whether adjusted cash book or whether BRS. yes, very good beta. very good. चलो next one. Now we are going to solve illustration number 7. अभी हम लोग आते हैं illustration number 7 पे. From the following information, prepare BRS.
on 31st December 2019 for Messrs New Steel Limited. Bank OD as per cash book. ठीक है, बैंक ओडी एज पर कैश बुक. नॉर्मल प्रॉब्लम? नो. बीआरएस का पर्पस क्या? अभी देखो ये बीआरएस का पर्पस क्या. नाउ हु इज आस्किंग दिस क्वेश्चन? चंदना गुप्ता जी. आफ्टर अटेंडिंग लास्ट सेशन, इफ यू आस्क मी बीआरएस का पर्पस, आफ्टर सॉल्विंग 6 क्वेश्चंस, कैश बुक एंड पासबुक, exceptional problem. I will just ignore these queries. Huh? Yes बेटा, स्टडी मटेरियल के जैसा साक्षी हम लोग सॉल्व करने वाले. आई नो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस. इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक. इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक. सीबी टू पीबी. पीबी को बॉक्स करो. फर्स्ट वन, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक. थिंक एंट्री पॉइंट. थिंक एंट्री पॉइंट. चलो एंट्री पॉइंट को याद करो. बाय बैंक तो कैश बुक में 0, पासबुक में. डेबिटेड बाय बैंक मतलब अवर क्रेडिट. क्रेडिट मतलब गोज आउट. क्रेडिट मतलब गोज आउट. सो 2,78,700. To get this answer in unbox, therefore add. Negative है, OD therefore add. OD therefore negative sign becomes positive. तो add करेंगे. Next, check issued 31st December but not presented to bank. Check issued. Entry point. Entry point बताओ बताओ बताओ. Entry point is cash book. Yes. माइनस 6,60,000 इशू किया तो, एंड पासबुक में 0. एड एंड ओडी देयरफॉर लेस. लेस. ओडी छे तो लेस छे. निगेटिव साइन. थर्ड वन, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय बैंक. बैंक में आया, डायरेक्टली रिसीव्ड बाय बैंक. एंट्री पॉइंट सीबी में 0. हियर 14,25,000. बॉक्स बॉक्स प्लस and OD therefore less. OD therefore less. Fourth, draft deposited in the bank. Draft means like check only. Demand draft hota hai. Deposited in bank but not credited by bank. So entry point cash book 13,50,000. अच्छा ये लेस लिख दिया. हाँ 13,50,000. पासबुक में 0. पासबुक को बॉक्स. 13,50,000 लेस. ओडी. ओडी है तो रिवर्स साइन एड. करेक्ट आंसर इज एड. बिल्स फॉर कलेक्शन credited by bank. Bills for collection credited by bank but not received advice to the company. So entry point पासबुक है. एंट्री पॉइंट पासबुक है. बैंक को पता है बैंक का क्रेडिट अपना डेबिट कैश कम्स इन, तो बैंक बैलेंस बैंक में बढ़ेगा. 8,36,000. ओडी therefore less. Less.
amount wrongly debited to company account by bank for which no details are recorded. Debited by the company, debited to the company by bank. बैंक ने डेबिट दिया 0 एंड बैंक ने डेबिट दिया मतलब हमारा क्रेडिट. क्रेडिट मीन्स गोज आउट, सो लेस निगेटिव बैलेंस. बॉक्स 7,40,000 ओडी, therefore add. Check the answer. Take on calci. 22,45,900 plus 278,700 minus 6,60,000 minus 14,25,000 plus 13,50,000 minus 8,36,000, 7,40,000, 16,93,600 फाइनल बैलेंस. यस, करेक्ट है. वर्किंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. I will teach you how to present the answer in exam. Don't worry. Don't worry. Presentation doesn't matter, but try to get the logic. कैसे लिखना है संकेत सर है. Yes. See बेटा, those students who are doing hard work from last 2 days. See, when I started this chapter, you found it very difficult. जब मैंने चैप्टर की शुरुआत की थी तब आप लोगों को लगा था अरे ये क्या है. But now you are finding this chapter very easy and every one of you is going to score more than 10 marks, 8 marks, 7 marks in this chapter. One adjustment if you go wrong, beta, you will get marks for steps. Don't worry. आपको steps के marks मिल जाएंगे. One add less, you might find कि आपका आंसर गलत हो गया, but at least you will score out of 10, 8, 6, 4. If you do it correctly, at least 50% adjustments. So don't leave this chapter in option. ये चैप्टर को ऑप्शन में मत रखियो. बहुत ही सिंपल चैप्टर है. अभी हम लोग ब्रेक लेने के लिए जा रहे हैं. ब्रेक के बाद मिलेंगे 12:35 को. ब्रेक 12:25 से 10 मिनट. रेक्टिफिकेशन स्टार्ट करने वाले. फुल एनर्जी से आना फॉर रेक्टिफिकेशन. आई वांट फुल ऑफ एनर्जी आफ्टर ब्रेक. ओके, रेक्टिफिकेशन डिफिकल्ट क्वेश्चंस. थैंक यू.
Now we are going to start with rectification questions. Last time we solved very tough question. That is question number 8. Today we are going to see some TYK questions. Many students are asking me about TYK questions. Sir, TYK questions are difficult. कुछ difficult नहीं रहे. एकदम simple है. So today we'll start with TYK questions. All questions we'll try to finish it. The trial balance of Mr. W and H failed to agree and difference 20,570 was put into suspense pending investigation, which disclosed that चलो. So purchase return day book. देखो बेटा, when you are solving this question in easy way, TYK questions, at least try to understand the concept. What is your beta basic duty and responsibilities? First, you try to solve these questions. If you want to become SIA, ये किसके लिए है? These guru mantras are only for those students who want to become CA. So hardly out of 10,000 registration, only 1,000 students want to become CA. Other students they want, but they are not taking any action for it. Okay. एक ध्यान में रखना. नंबर 1, ओडी का फुल फॉर्म अभी ध्रुव पूछ रहा है मुझे. ध्रुव शाह, ओडी का फुल फॉर्म ओवरड्राफ्ट लास्ट सेशन में एक्सप्लेन किया था. Want to become CA, तो पहले understand the concept from SS. After understanding the concept, try to solve questions by own. Number 3, after getting the concepts, you will find only 20% easy, only 20%. Okay, you won't understand 80%. It's okay, beta. This is a learning phase. ये learning phase है. Rectification. Then third one, after that, Sanket sir will solve questions. Then beta you will understand 80%. And by making practice, you will understand 100%. Practice more than 4 times. लगातार, same question. And when your base is strong, foundation is very simple. और एक बार फाउंडेशन क्लियर हो गए ना, फिर कॉन्फिडेंस बहुत आ जाएगा. So learn in this way. ठीक है, चलो. So start TYK. These are difficult questions. Okay. कैश मेमो एंड इनवॉइस, ये डिफरेंस मैं आपको बाद में बताऊंगा बेटा. राम जी. अकाउंट्स जिया, इफ यू थिंक योर अकाउंट्स आर वीक, स्टार्टिंग में यू विल फाइंड वीक बेटा, बट आफ्टर सर्टन डेज यू विल फाइंड इट्स वेरी सिंपल. डोंट वरी. बोलो ही मत कि मेरा अकाउंट्स वीक है. चलो. Write down beta in your 400 pages book.
करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। राइट डाउन। यस बेटा, निश्चय, डोंट वरी। हर्षिता बोल रही है एक स्केड्यूल बता दीजिए। ठीक है बेटा, बता देता हूं। स्केड्यूल लिख के देता हूं आपको, डोंट वरी, जाते जाते। हाउ टू स्टडी। चलो, करेक्ट एंट्री बेटा। अच्छा, विच वन इज डिफिकल्ट, सबसे डिफिकल्ट? परचेस रिटर्न डे बुक। Purchase return day book has been correctly entered and total 6160, but not posted to the ledger. So, beta, purchase return book, creditors account debit to purchase return. Six one six zero 6160. But what happened? But not posted to correctly recorded, correctly entered and total, but not taken to the ledger. लेजर में कौन से नहीं लिया? परचेस रिटर्न अकाउंट में. So correct wrong entry is creditors recorded correctly, but instead of purchase return, we have to record to suspense. We have not taken total to purchase return account. सेम सेम क्या है? सेम सेम क्या है? Creditors same. So rectification entry, suspense account debit to purchase return 6160 6160. Second entry. Second entry, discount received 1320. Discount received 1320, debited to discount allowed account. Okay. So what is the correct entry? Creditors account debit to discount received. 51 कितना है अमाउंट? 1320. Amount is correct, na? 1320. But what happened? You recorded at creditors account debit, but discount allowed debit to suspense 2640. क्या क्या सेम है? क्रेडिटर्स सेम. सो डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट करना है टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1320. डिस्काउंट अलाउड को भी कैंसल करेंगे क्रेडिट बाय क्रेडिटिंग इट, एंड सस्पेंस को भी कैंसल करेंगे 2640. नंबर 3,
sales account under same side, suspense to sales, suspense to sales, 10,000. Fourth one, suspense to sales. Fourth one is a credit sale of 1470 had been debited to customer account 1740. Very simple. Debtors account debit to sales 1470, but recorded as debtors account debit 1740 to sales 1470 to suspense 270. Debtors correct. Sorry. Sales correct. Debtors we have to reduce. Debtors को हमें reduce करना है by 270 and suspense debit 270. Fifth one. A vehicle bought originally, IMP या बेटा ये या IMP मार्क करो, बाकी के इजी थे. A vehicle bought originally 7,000 4 years ago and depreciation 1,200. ठीक है. Sold for 1,500 in the beginning of the year, but no entry in the books. Depreciated by नहीं है. To depreciated to means it's a book value. It's a book value. Okay. 7,000 is to confuse us. When it is important, if it is depreciated by. Okay, so 7,000 minus 1,200 will be book value. If wording is depreciated by, लिख के रखो 1,200, तो book value is equal to 7,000 minus 1,200. Very, very important. If wording is it is only for your concept clarity. Depreciated to means depreciated तक किया. Depreciated to मतलब इतना depreciate होके 1200 वैल्यू है. Depreciated by मतलब 1200 माइनस करना है. But depreciated to मतलब depreciation माइनस करके your balance is 1,200. Very, very important. One word will make difference. One word will make the difference. Very, very important. Okay. So depreciated to ठीक है. देखो मुश्किल है पर संकेत सर के स्टूडेंट्स कभी डरते नहीं है इससे. Depreciated to and depreciated by will make the difference. So entry will be bank account debit 1,500 to vehicle 1,200. It is book value. Bank is always by selling price. Selling price to vehicle to profit.
जो पी एंड एल में जाएगा 300. सो टू पी एंड एल कर परत ओपन टू पी एंड एल उठे टू पी एंड एल हुआ. नाउ बैंक अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 1500. Only bank is debited to suspense 1500. Not other than bank. So now correct entry is rectification entry is two vehicles same balance. Common same हमने पहले लिख लिया. To profit 300 and suspense debit 1500. Beta, I think these entries are difficult one, but Sanket sir students, they will never give up. Okay, easy, थोड़ा practice करना. Fifth one is difficult one. Sixth one, an accrual of 560. Accrual means payable because charges are payable. It's not receivable. Accrual word can be used for both receivable भी and payable भी. So expense payable बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है. Expense payable entry. So sixth one, telephone charges, expenses account debit to payable, to telephone charges payable 560. Telephone charges to telephone charges payable 560. Wrong entry में no entry. कितना simple है. Now very important concept. Number 7. IMP entry, sir. Most important VIMP. VIMP. Okay. VIMP entry. A bad debts of 1560. Please now you have to be very careful because many 99% student won't get this entry. Now I am explaining it. This entry is very difficult one. So have patience. A bad debts of 1560 had not been written off and provision for doubtful debts should have been maintained at 10% of trade receivable, which shows the balance in trial balance 23,390 with a credit provision of 2320. सर देखो एंट्रीज देखो. If I open reserve for doubtful debts, you will get this concept in final accounts also. Final accounts में वापस समझेगा. You have to write this pro forma in your ledger account 100 pages book. All pro formas. So asset के नीचे reserve for doubtful debts. What is RDD? Reserve for doubtful debts. It means, sir, what it means? Suppose if Mona ma'am, from Mona ma'am, I am receivable of ₹100. मेरे बुक में मुझे मोना मैम से पैसा आने वाला है. So Mona ma'am is my debtor. But I think she won't pay me. So I will make a provision. So debtor को debit balance होता है, तो provision को credit balance होता है. Provision means I think I won't get 10 rupees, so I will reverse the entry. But I cannot reduce Mona ma'am account. So normally bad debts नहीं है ना.
बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है? बैड डेट्स टू डेटर्स। ओके, ये एक्चुअल बैड डेट्स। जब मोना मैम ये पैसा डुबाएगी, पर मोना मैम ने पैसा डुबाया नहीं, बट आई थिंक मोना मैम विल नॉट पे मी। मेरा मन बोल रहा है कि मोना मैम 100 रुपीज नहीं पे करेगी, शी विल नॉट पे मी मोर देन 80 रुपीज। तो मैं क्या करूंगा? आई वॉन्ट वेट फॉर द फ्यूचर। मैं लॉस आई विल बुक इट टूडे। सो जब एक्चुअल बैड डेट्स नहीं होता है, बैड डेट्स किधर जाता है? पी एंड एल में। इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। ओके, तो इंस्टेड ऑफ बैड डेट्स आई विल कॉल इट एज आरडीडी अकाउंट डेबिट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। Reserves for doubtful debts. It's a provision. Provision for bad debts. And instead of debtors, I cannot reduce debtors. क्यों रिड्यूस नहीं कर सकता हूं? क्योंकि मैं डेटर्स इसलिए रिड्यूस नहीं कर सकता हूं बिकॉज एक्चुअली मोना मैम ने पैसा डुबाया नहीं। सो आई विल ओपन वन टेम्पररी अकाउंट जिसका नाम है अगेन आरडीडी, बट दिस आरडीडी पी एंड एल में जाएगा एंड दिस आरडीडी विल रिड्यूस फ्रॉम द डेटर्स। एसेट में से माइनस होगा, डेटर्स में से प्रेजेंटेशन, डेटर्स में से माइनस दिखाया जाएगा। इट्स अ प्रेजेंटेशन। वन मोर टाइम, entry is, please recall this entry, entry is RDD to RDD। सर ऐसे कैसे एंट्री हुआ? RDD डेबिट मींस जो ट्रांसफर टू पी एंड एल, जो लॉस दिखेगा। एंड आई कैन नॉट गिव क्रेडिट टू मोना मैम बिकॉज शी हैज नॉट, उन्होंने अभी तक पैसा डुबाया नहीं है। सो आई विल ओपन वन टेम्पररी अकाउंट, और वो टेम्पररी अकाउंट का नाम है आरडीडी। ये ध्यान में रखो। नाउ व्हाट इज द प्रोफॉर्मा? प्रोफॉर्मा इज वेरी सिंपल। RDD has a opening balance, by balance brought down, last year opening debtors multiplied by some percentage. You will estimate 5%, 2%, 10%. You will estimate it. You will estimate. Estimate है तो provision है. Estimates, yes sir. By P and L. By P and L. During the year का estimation. During the year का estimation. To डेटर्स, एक्चुअल बैड डेट्स। जब एक्चुअली डूबेगा तो इंस्टेड ऑफ बैड डेट्स टू डेटर्स आई प्रोवाइडेड ना, तो मैं आरडीडी टू डेटर्स एंट्री करूंगा, नॉट बैड डेट्स टू डेटर्स। मैं क्या एंट्री करूंगा? आरडीडी टू डेटर्स। एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग डेटर्स इनटू परसेंटेज। 5 टाइम्स रिकॉल करो, 5 टाइम्स रिकॉल। राइट डाउन इट इन यूर लेजर अकाउंट में। लेजर अकाउंट में रिकॉल करना है, लिखना है। वेयर टू रिकॉर्ड दिस? इन योर लेजर अकाउंट। ट्राई टू रिकॉल दिस प्रोफॉर्मा, यू विल गेट द आंसर, डोंट वरी। So we have to pass two entries. P and L to RDD means during the year provision, and RDD to debtors. चलो RDD का प्रोफॉर्मा वन मोर टाइम। Yes beta, final account में you will find it very simple then, but I know this is difficult one. Don't worry, if you practice it you will get the answer. Yes, practice करने से आंसर आएगा। don't worry beta। चलो, what is the pro forma? By balance brought down, yes sir। RDD मतलब क्या? डेटर्स के अगेंस्ट की प्रोविजन। डेटर्स, ओपनिंग डेटर्स into some percentage is given in the question, don't worry। By P and L, two debtors, two balance carried down, closing debtors into percentage। Yes,
Buy balance brought down by P&L, 2 debtors, 2 balance carried down. Buy balance brought down by P&L, 2 debtors, 2 balance carried down. Buy balance brought down by P&L, 2 debtors, 2 balance carried down. Buy balance brought down by P&L, 2 debtors, 2 balance carried down. Buy balance brought down by P&L, 2 debtors, 2 balance carried down. Over. So now, see a bad debts of 1560. 1560. Bad debts. Okay. Then 10%, 23,390. 23,390 into 10%. चलो एक बार वापस. Buy balance brought down. 2 debtors by P&L. 2 balance carried down. Okay. चलो. So a bad debts of 1560. मतलब 2 debtors. 1560. Closing debtors 23,390. टू थ्री थ्री नाइन. एक ही सेकंड ना बेटा, एक ही मिनट. ओपनिंग प्रोविजन 2320. टू थ्री टू जीरो 23,390 into 10%. Oh, ho, 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 ho. Sorry, my friends. We have other daters also. So this data is not correct actually. अपने daters भी है ना, देखो 1470 suspense to daters 270. So our data balance is reducing. 23,390 minus 270. और कुछ डेटर्स थे क्या बेटा? ट्वेंटी वन 560 क्या माइनस 270 माइनस 1560. हाँ 2156. 2156. हाँ ठीक है. अभी देखो अभी आईसीआई ने क्या किया देखो. 2 डेटर्स
ये छोड़ दो। क्लोजिंग डेटर्स कैसे लिया? क्लोजिंग डेटर्स यू हैव 23,390 रेड पेन है ये 23,390 इन योर टू बैलेंस कैरिड डाउन। यस, मैं भूल गया। एंड देयर इज वन एंट्री 1560, ये आपका बैड डेट्स है, इट्स योर बैड डेट्स माइनस माइनस वन मोर एंट्री बेटा, एक और एंट्री है जो आपका 1560 के बाद, हाँ 1560 और ऊपर एक एंट्री आपने किया था, डेटर्स को क्रेडिट किया था -270। सो योर क्लोजिंग डेटर मस्ट बी 10% ऑफ दिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैड डेट्स माइनस करना है एंड रेक्टिफिकेशन एंट्री। सो 23,390 -1560 -270 into 10%, 2156. And yes, अभी आपको मैं करेक्ट प्रोफॉर्मा बता रहा हूं। यस, वी विल रिड्यूस बैड डेट्स ऑल्सो, ठीक है। एंड टू डेटर्स में a bad debts of 1560 had not been written off। ये 1560 हम लोग इधर कम करेंगे। सो पी एंड एल में कितना आएगा? पी एंड एल में टेल मी द बैलेंसिंग फिगर 2320 1396 1396, ये पी एंड एल में आना चाहिए। अभी आईसीआई ने क्या किया है? सी द एंट्री बैड डेट्स टू डेटर्स एंड प्रोविजन टू पी एंड एल 164 लिया है। तो मेरे हिसाब से ये 164 क्यों आया, ये मैं आपको बताता हूं। पहले तो बिकॉज 2320 -2156, ये 164, ये दोनों का डिफरेंस है जो आईसीआई ने पी एंड एल में लिया है। इफ यू आस्क मी पर्सनली, एंट्री मस्ट बी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू डेटर्स एंड पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू। मेरा एंट्री क्या है ये मैं बताता हूं। मेरा एंट्री एंड आईसीआई का एंट्री, yes, we will rectify this in next study material. So provision for doubtful dates 1560 to daters 1560 and P&L account debit to provision for doubtful dates 1396. दिस इज एज पर एसएस। आईसीआई ने क्या किया हुआ है? बैड डेट्स इंस्टेड ऑफ बैड डेट्स प्रोविजन, बैड डेट्स को डेबिट दिया है 1560। ओके, मैंने प्रोविजन को डेबिट दिया, अकाउंट को दे डायरेक्टली डेबिटेड पी एंड एल को। रॉन्ग है मेरे हिसाब से, बट ठीक है, अभी थोड़ा रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। एंड पी एंड एल अकाउंट डेबिट, सॉरी, और उन्होंने डायरेक्टली डिफरेंस लिया है 2320 एंड 2156 और प्रोविजन रिड्यूस करना है तो पी एंड एल को क्रेडिट किया एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में 2320 -2156 164 लिया हुआ है। दोनों के व्यूज अलग है, बट इफ यू आस्क मी पर्सनली दिस इज मोर अप्रोप्रिएट इफ यू ओपन लेजर अकाउंट। पर आईसीआई ने क्या किया? बैड डेट्स की एंट्री पास की एंड डिफरेंस इन प्रोविजन लिया, बट दे हैव नॉट पास इट थ्रू बैड डेट्स की एंट्री, नॉट रूटेड थ्रू प्रोविजन बट इट डायरेक्टली डेबिटेड टू पी एंड एल। अभी ये थोड़ा सा मैं बताऊंगा, आप अभी के लिए दोनों व्यूज लिख के रखो। वन यू राइट आईसीआई वे बिकॉज आईसीआई बेटा रोजी रोटी। यस, सो बैड डेट्स टू डेटर्स, सो आईसीआई का वे एंड देन provision for doubtful dates to P&L without opening this. They have taken closing provision minus opening provision.
सो बैड डेट्स की एंट्री कितनी 1560 एंड 164। एसएस क्या बोलता है भाऊ? एसएस बोलता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू डेटर्स 1560 एंड पी एंड एल टू प्रोविजन कितना आया था अपना 1396 इज अकॉर्डिंग टू मी। ऐसे और इधर मेरा थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और उन्होंने ये कुछ भी नहीं किया। सो नो एंट्री, सो सेम एंट्री यू विल राइट ओवर हियर। ओके, सो थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। I said directly debited bad debts, and according to me, they should debit provision for bad doubtful debts. This is according to pro forma. Study material versus SS. For this question, okay, we will rectify it and will tell you. दोनों व्यूज लिखो। चलो नेक्स्ट वन, डिफिकल्ट था ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा इफ यू ओपन अकाउंट इट विल बी इजी, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन है पता है मुझे, बट आफ्टर अटेंडिंग फाइनल अकाउंट्स यू विल फाइंड दिस वेरी सिंपल। सी बेटा, when you are in learning phase you might feel it's difficult, but don't give up। मैं 10 बार बोलता हूं आपको, IMP क्वेश्चन यू मार्क इट ना, यू डू प्रैक्टिस ऑफ ओनली IMP क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, इट विल बी इजी देन। ठीक है, चलो 8 नंबर, ठीक है, इट्स ओके बेटा। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट आई हैव गिवन ओवर देयर, टूल्स बॉट 1200 डेबिटेड टू परचेस अकाउंट, वेरी सिंपल। टूल्स अकाउंट डेबिट, लूज टूल्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना है लूज टूल्स टू बैंक? 1200, but you debited to purchases, it's very simple sir, to bank, wait, so entry will be looks to the account debit to purchases 1200, simple। चलो next one, 9th one, the proprietor withdrawn for personal use goods। तो proprietor मतलब क्या? drawings to purchases 1960, no entry, same entry, drawings to purchase। चलो चलो चलो, drawings to purchase, ओके। लो कैल्सी पे सस्पेंस अकाउंट, यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर सस्पेंस। सस्पेंस पूछा है क्या? यस। 20,570 का, चलो मिल रहा है क्या? देखो टेक ऑन कैल्सी, यू स्टार्टेड विथ डेबिट, सो सस्पेंस के डेबिट में 6160, देन 2640, देन 10,000, देन 270, then 1,500 debit, then nothing, only debit 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 debit। so balancing figure 20,570, yes we got the difference, by balance carried down we got the difference 20,570, so our answer is correct, 20,570, suspense tallied, so difference का rectification हो गया, so we rectified।
बेटा यू लिसन दिस लेक्चर केयरफुली बेटा प्लीज, ये लास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट था, डोंट गिव अप बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मैं एक बार क्लियरली बोल देता हूँ। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन था, टू बैलेंस कैरिड डाउन था, टू डेटर्स था एक्चुअल, एंड बाय पी एंड एल। पी एंड एल इज अ बैलेंसिंग फिगर। अभी ओपनिंग में कितना था बेटा, देखो ओपनिंग प्रोविजन इज ऑफ 2320, बैड डेट्स कितना था 1560, टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन 23390, उसमें से 1560 माइनस करना है, एंड माइनस करने के बाद बेटा आपको 1560 माइनस करके ऊपर का भी एक माइनस करना था। कौन सा माइनस करना था ऊपर का, एक डेटर्स आपने कम किए थे, डेटर्स कम किया था 270 रेक्टिफिकेशन में, सो 10%, टू 2156, एंड बाय पी एंड एल अकाउंट 1396। और आईसीए ने क्या किया, ये लिया ही नहीं, टेक अ डिफरेंस, और उन्होंने सिर्फ इतना लिया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, देखो 2320, एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन 2156, एंड इधर डायरेक्टली 164 ले लिया बैलेंसिंग फिगर टू पी एंड एल, विच इज रॉन्ग। आई वोंट से रॉन्ग, बट कुछ अलग व्यू रहेगा। यस, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो बेटा मैं स्लो ही जा रहा हूं। आई हैव टेकन मोर देन बेटा 10 to 20 मिनट्स टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट है बेटा। सौरव डिफिकल्ट तो होने ही वाला है। एंट्री क्या की, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू डेटर्स, ये एंट्री किया 1560, एंड पी एंड एल टू आरडीडी, ये एंट्री किया। ओपनिंग एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैट डाउन की, वी नेवर पास एंट्री, वी पास एंट्री प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू डेटर्स एंड पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू आरडीडी। ओके, वेरी सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है बेटा, we'll stop today because today we solved very difficult question. You try to solve this question number 2. So next session में बेटा 2, 3, 4 you finish with TY के question. So next time बेटा we will take BRS के questions also, again rectification. So first half, second half. I know today's session was very better, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन था, थोड़ा डिफिकल्ट था, पर संकेत सर के स्टूडेंट्स नेवर गिव अप। तो बेटा आप लोगों को अच्छे से समझा होगा। प्रॉमिस मी यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन वन मोर टाइम। यस, और साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट डोंट वरी बेटा, फाइनल अकाउंट्स में पूरा समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप यू विल लर्न समथिंग, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे आपका इंप्रूवमेंट होता जाएगा। सो लर्न दिस न्यू प्रोफॉर्मा, यू विल फाइंड दिस सिंपल इन फाइनल अकाउंट्स, जब हम लोग एंड में जाएंगे तब। सो थोड़ा नया था पर कॉन्सेप्ट कवर कर लिया। ओके, कुछ चीजें डिफिकल्ट आएगी बेटा, उससे हमें गिव अप नहीं करना है, आईएमपी लिख के उसको बार बार याद करना है। ओके चलो, सो विल स्टॉप, और अभी हम लोग मिलेंगे मंडे को। 2, 3, 4 क्वेश्चन फिनिश करो जल्दी से, नहीं हुआ तो मैं इसका कुछ तो आपको दे ही दूंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। एंड समझाए तो प्रैक्टिस करो, टुडे बहुत प्रैक्टिस करनी है। 2 days ऑल लेक्चर्स वापस से एक बार देखो, बीआरएस प्लस रेक्टिफिकेशन, यू विल फाइंड इट सिंपल। 1.5 के स्पीड से भगाओ, 1.5 के स्पीड से भगाओ, याद करो याद करो याद करो। ओके ठीक है, चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।